Mhm. Got it. Now, blood supply of the lung is there pulmonary plexus at the hilum, which is contribution by the sympathetic system and parasympathetic system. And in parasympathetic system, there is a vagus. If you stimulate the sympathetic system, it will definitely cause vasoconstriction, as it does everywhere else except pulmonary circulation. Then it will cause bronchodilation also, and it suppresses the secretion. If you stimulate the parasympathetic system, it causes vasodilatation, and it will cause bronchoconstriction and increase the secretions. Now, this is the basic thing which we keep in our mind when we are treating the lung. Now, lung functions, there are two types of lung function, respiratory and non-respiratory. And the non-respiratory functions we always ignore because there are about 40 types of cells in the lung. And one type is only which causes diffusion of gases, that is type 1. Now, gases diffuse from the nose or from the mouth when you breathe in the gaseous media up to respiratory bronchiole. From respiratory bronchioles onwards, it means up to 16th generation, it is a conducting pathway. From 16th through 23rd generation, this is respiratory pathway, the diffusion of gases takes place, where the gases come in contact with the blood. So gases are going out of the lung and coming inside the lung also. So if you look at this from nose up to respiratory bronchiole, the gases are diffusing in the gaseous media. And from the respiratory bronchiole, gases going into the blood is passing through the liquid media because it's passing through alveolar epithelium, going into interstitial space, then going into capillary endothelium, then it goes into plasma, then goes into the RBC wall, and then goes into the RBC plasma, then goes to the mitochondria. So that's how it goes. It is called alveolar capillary pathway plus capillary to mitochondrial pathway. This whole pathway, we have to understand this whole pathway before we understand the diffusion of gases. Now, when the gases are passing through the gaseous media from the nose or mouth up to the respiratory bronchiole, here the Graham's law of diffusion applies because the diffusion of gases in the gaseous media is inversely proportional to the square root of their density, or in other words, square root of their molecular weight. Molecular weight of carbon dioxide is 44, molecular weight of oxygen is 32. So oxygen diffuses faster. अगर आप इनकी ratio बनाएं, oxygen diffuses faster in gaseous media than the carbon dioxide. So even if the patient is apneic or even the patient is respiration is suppressed, the oxygen is diffusing, but the carbon dioxide cannot come out because it is very slow. For this removal of carbon dioxide, the patient should be breathing, or we should breathe for the patient. So that's why if the patient goes into hypercapnia, we have to ventilate and take the gases out. Then for respiratory bronchial onward, it's passing through liquid media. Then in addition to pressure gradient, because whenever there is a diffusion, or if the things travel from one place to another place, so it's according to from the higher pressure to lower pressure. If you put water on the floor, have you ever seen the water going on the pillar? No. If you put the water on the pillar and it goes down, but you can see this up to this phenomena when you go to Jinn Valley. मदीना में गए कभी जिन वैली में? सड़क ऐसे जा रही है, आप कार खड़ी कर दें, न्यूट्रल में डाल के कार उल्टी जा रही है आपकी, पानी की बोतल वहां रख दें, पानी की बोतल ऊपर चल रही है, सिर्फ वहीं देख सकते हैं. Otherwise, according to Charles' law of partial pressure, the gas, there is a movement of the water or the gas from higher pressure to lower pressure. In addition to that, there are laws of diffusion which apply. In the gaseous media, it is a Graham's law. In the liquid media, it is Henry's law of diffusion.
Henry's law of diffusion says that diffusion is directly proportional to solubility coefficient. Carbon dioxide 24 times more soluble than the oxygen. So carbon dioxide comes very quickly into the alveoli, and very quickly it makes the pressure on the both sides equal. Now, if you cannot remove the carbon dioxide, combine these both laws. If you take 4 times more diffusible carbon dioxide than the oxygen, then if you look at the diffusion in the gases, oxygen is more diffusible. If you combine both laws together, then from the nose up to the RBC, this ratio is 1 to 20. So that's why in ordinary terminology, we say carbon dioxide is 20 times more diffusible than oxygen. So this thing we have to keep in mind. Then we'll have to see, say alveolar capillary pathway, its total distance is 0.2 micron. 0.1 micron is only capillary epithelium, and 0.1 is the alveolar epithelium, 0.1, 0.1. So if this alveolar capillary pathway of the gas, in other words, how it can be increased if you got a fluid in the alveoli, then fluid in the interstitial compartment, or if the vessels are too much dilated, or if the vessels are too much constricted, that will cause oligemia of them. That will increase the compliance, but it will decrease the diffusion. So this is both. You will have to look at that alveolar capillary pathway very carefully. Now there is constant fluid going out of the capillary into the alveoli. From the alveoli, it is clearing 10 to 20 mils every hour. The water is going into the lung, and the lung is clearing it up. It is clearing according to the Starling's law of forces. It's also, there is a richest lymphatic supply in the lung. It is taking it. Then the lymphatics goes into azygos vein, and then into the venous blood. If you increase the venous blood pressure greater than the pressure in the azygos vein, then the lymphatics will not be able to clear into the clear the water which is coming from the lung. So then it means the edema will persist, and this will cause resistant pulmonary edema. Whenever you put the patient on a ventilator, or whenever you are putting the you put the CVP catheter in, and you are giving a PEEP to the patient, you should be very careful choosing the optimum PEEP. Because with the PEEP, if you increase the central venous pressure higher than the pressure in the azygos vein, then the lymphatics will not be able to drain into it. Then that edema will become resistant. You cannot clear it up. So always try to choose the optimum PEEP. You lower the PEEP, then let that lung be cleared by the lymphatics. Right. So there are two types of diffusion. Over here, though. अपना ही लाऊं इसमें कोई स्लाइडें मिस हो रही है मेरे को. Right, non-respiratory function. As I told you, there are 40 types of cells in the respiratory system. And if you look at when we are breathing, it's a breathing is of two types. One is the respiration, other is a ventilation. Respiration is a negative process of movement of the gases into the lung or removal of gases from the lung to the atmosphere. And ventilation is a positive process. So respiration is a natural way of getting the gases into the lungs. When your inspiratory muscles contract, they pull the chest out, they create a subatmospheric pressure in the lung. Due to pressure gradient, the gases go into the lung. When they stop contracting, then
it becomes positive pressure as compared to atmospheric pressure, the gases come out. This is negative. So all the cells in the body, in the lung, they are used to negative pressure. They are functioning on negative pressure. They are not functioning on the, when you reverse this process by putting the patient on a ventilator, you are creating a positive pressure. There will be some disturbance of function of those cells when you put the patient on a ventilator. What are those cells doing? This is the metabolic and non-respiratory function of the cell. It has got metabolic function, endocrine function, transformation of biochemical substances, liquid and solute exchange, defense mechanism. These are the main headings. There are so many cells in each heading. As I told you, there are 40 different types of cells. Cells with specialized function require extra energy, and energy is supplied either directly from the lung or indirectly through the blood. In metabolic function, oxygen utilization and energy production, surfactant synthesis. We only know surfactant. We don't know the other function of the cells, which needs concentrated on surfactant. Surfactant is itself a separate subject. So if the time is given, then we can discuss this also. Then protein and connective tissue synthesis. Then endocrine function. The lung is definitely endocrine organ. It has got autocrine, paracrine, and neurocrine functions. Right? Endocrine functions. So all these histamine, opiate peptides, ketone, serotonin, and substance P and VIP, all they have got either function there in the cell, they are produced there, and they are acting over there, or they are taken away from on the other organs they function in. Endocrine ki they are produced in one place and they are effective in another place. Then humoral substances, like all these cyclooxygenase, prostaglandin D2, E2, F2, and I2, then thromboxane A2, then lipoxygenase pathway, we are leukotrienes, and they have got different functions. So when you put the patient on a ventilator, all these are disturbed. So according to symptomatology, you control it. You cannot control in a definite way. Every patient who has got a lung pathology, particularly ARDS, has to be individually on the individual presentation. You have to control it, right? So ये कह नहीं सकते कि एक बन गया ये पाथ हर पेशेंट को उसी पे आप ट्रीट करेंगे. No, you have put the patient on ventilator. Now, according to their effect of these disturbance of these different chemical substances, humoral substances, you control it. Now, transformation of substance like acetylcholine, serotonin, and all these things. Then you must be knowing renin-angiotensin system. It's very important. Angiotensin 1. Where does angiotensin 1 come from? Angiotensinogen. How does angiotensin is acted upon by the renin? Renin comes from the juxtaglomerular apparatus. And there are, what are the stimuli on the blood side and what are the stimuli on the kidney side, on the renal tubular side? You must be knowing all the details about it. But angiotensin 1 is produced in the blood. And angiotensin 1 is just a precursor of angiotensin 2. It does not have any function. When it passes through the lung, it is converted by converting enzyme. इसको काइनेज 2 भी कहते हैं और इसको डाइपेप्टाइडिल कार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी कहते हैं. It converts angiotensin 1 to angiotensin 2. Then angiotensin 2 has got multiple functions. Particularly, it is a very strong vasopressor. It also stimulates the aldosterone, production of aldosterone also. Now, this is the most important causative factor of hypotension in ARDS or in respiratory failure, because angiotensin 1 is not equivalent to angiotensin 2, which is the humoral factor to control the blood pressure. So this thing we should always keep in mind. This is the predominant factor of cause of hypertension in the ARDS patient who are put on the ventilator. Then vasopressin and all the other things also. Now, these transformation of other substances, liquid and solute exchange. Lungs are as wet as other organs of the body.
because wetness is required for the function of the epithelial cell. Right. Outward filtration about 10 to 20 mils per hour. 10 to 20 mils अंदर आते हैं लंग के और ये इतना ही बाहर निकलता है. Some of it is taken away by the Starling's forces. Most of it's taken by the lymphatics. Right? They drain into esophagus vein. So it's a balance between the filtration rate of removal. Defense mechanism. Now, clinically, when we assess the lung, we always, as usual, we take the history of dyspnea, cough, and sputum. Then we do the physical examination, as we do for every disease, X-ray chest, complete blood picture, and sputum examination. This is a routine thing which we do. Now, what is the objective of doing the lung functions is that to determine the nature of the pulmonary disorder. What is the problem with the lung? To find out the causative factor, then to quantitate the degree of impairment. If it is impaired, up to what degree it is impaired. Third is to further understanding of pathophysiology, we need to do the lung function test, which we do not concentrate much on it. Now, lung function tests involving no instrumentation, you must have read in the second year of your physiology. Then in lung volumes, FEV1, FRC, residual volume, TLC, and ratios. Ratios are FEV1 and FEV, residual volume, and TLC ratio also. So these are all done by pulmonologists, but it doesn't mean the pulmonologist should become critical care physician. It's only one aspect, very minor aspect of critical care medicine. Because better than pulmonologist. So I've been fighting with the Sultan Faruqi for so many years. I've been 18 साल में examiner रहा हूँ कि critical care medicine की आप specialization ना शुरू करो. There's not state of the art single ICU in whole Pakistan, which we can say it is a state of art ICU that time. आँखों वाले भी चीखे, दूसरे भी चीखे. मैं कहा आप लोगों का भी नहीं. हर कोई आके इंचार्ज बना बैठा अपने मरीज को ट्रीट करके चला जाता है. That's not a state of art. तो फिर मैंने कहा this should not be open for every specialist. अगर रखना भी है, it should be at least 2 years they should work in the anesthesia, because the most important aspect of intensive basis of intensive care is that you should have advanced knowledge of physiology and pharmacology. In pharmacology, not only you should know the pharmacokinetics, you should know the pharmacognosy, and you should know the pharmacodynamics also. So 3 aspect आपको डिटेल में आने चाहिए. So उसके बाद technology involved is, and technology only needs to know how to do, जिसमें ये ventilation और दूसरी monitoring हर चीज आती है. So pulmonologists only concentrate on the lung, and critical जितना मर्जी पढ़ लें, they can never become a good intensive care. Intensive care जो है काम करने से आती है, और पीछे इसके बैकग्राउंड नॉलेज जरूर होना चाहिए, लेकिन काम करने से आती है, सिर्फ पढ़ने से, किताबों से पढ़ने से नहीं आती. Now, measurement of mechanics of lung, resistance and compliance. So my teacher, Professor Robinson in Birmingham, he used to say, always remember time constant. In relation to lung physiology, time constant. Time constant is the time required to fill any vessel or any container up to 67% of its capacity. That's the one time constant. Baki kitna bach gaya? 33. Now, out of this 33, 67% of 33, the time required to fill that is called time 2 constant. Baki mein jitna bas karte jaye is tarah. Lekin time constant in relation to lung depends on the compliance and resistance. It is a compliance and resistance. You have to see the resistance. These are very, very important factors when you are ventilating a patient. You'll have to concentrate on these. Now, there are different ways of measuring this. Resistance, interrupter method, plethysmography, then Hagen-Poiseuille law and Ohm's law. There are 6 physics laws which applies to lung. कौन से हैं? Graham's law of diffusion, then Henry's law of diffusion, Hagen-Poiseuille law, Ohm's law.
then Laplace law, then Charles law of partial pressure. 6 laws हैं. 6 laws को हम अच्छी तरह समझ लें. यही 6 laws सारी एनेस्थीसियोलॉजी में भी इन्वॉल्व होते हैं और इसी पे सारा कुछ डिपेंड करता है. एक दिन मैंने पकड़ के ये आपका जो होता है फ्लो मीटर उतार के मैंने पकड़ा दिया. हमारे काफी सीनियर मेडिकल ऑफिसर मेरे पास आईसीयू में गया, मैं इसको डिस्क्राइब करूं. They could not describe it properly. ये पता था कि ये फ्लो मीटर ऑक्सीजन वाला हम एयर पे नहीं इस्तेमाल कर सकते. एयर वाला हम उस पर नाइट्रस ऑक्साइड पे नहीं इस्तेमाल कर सकते, कार्बन डाइऑक्साइड पे नहीं इस्तेमाल कर रहे, लेकिन रीजन का नहीं पता था. तो उस पर सारे फिजिक्स के लॉ अप्लाई होते हैं. एक फ्लो रिस्ट्रिक्टर भी होता है, ठीक है. फिर उसको मैंने पूछे डिफरेंट फ्लोज के क्या क्या होते हैं, लेकिन उस बेसिक को पढ़ते नहीं है. या ये पूछा नहीं जाता एग्जाम में, पूछते नहीं होंगे एग्जाम में, पूछते जो कंपनी ने बना दिया तो बना दिया, बस चला दिया. ठीक. हमें जो होता है जब हम एग्जाम में अपील हुए थे, हम कहते होते थे कि ये बाहर का जो पार्किंग मीटर लगा हो ना, जहाँ पे वेस्टर्न कंट्री में जाए उसमें मीटर लगे हुए, उसमें पैसे डालने होते, हो सकता है इसकी भी स्ट्रक्चर पूछ लें. ये वेंटिलेटर पीछे से काटे होते थे, ये बूस्ट से इसके सर्किट कैसे हैं, कैसे चलते हैं. हमें यहाँ तक नीड है उसमें फिजिक्स पढ़ाते थे. ये खुदा की शुक्र है हमने पढ़ी है सारी. सबसे मुश्किल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड क्लिनिकल मेजरमेंट हुआ करता था और सबसे आसान भी यही है, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे क्लिनिकल चीज़ों से हट के है ना, हम इस पर कंसंट्रेट नहीं करते. कंसंट्रेट करेंगे यू विल गेट एवरी आंसर. अब देखें हेगन पाइसली लॉ एंड ओम्स लॉ, इट्स अप्लाइड एवरीवेयर वेयर एवर देयर इज ए consideration of pressure, consideration of flow, concentration of resistance. इस तरह Laplace law है आपका. Laplace law is applied everywhere. It applies on the bladder, it applies on the gut, it applies on the vessel, it applies on the आपका alveoli. तो इसकी different explanation है. तो इससे it's a beautiful these laws if you apply and if you understand this law, it's a very simple thing. आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, आप उसको फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे आएंगे. तो ठीक. और कंप्लायंस को, कंप्लायंस इज नथिंग बट वॉल्यूम चेंज पर यूनिट चेंज इन प्रेशर. लाइक एक प्रेशर पे आप वेंटिलेट कर रहे हैं पेशेंट को, उसका 1 सेंटीमीटर ऑफ मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर ऑफ compliance. Words resistant to is by the blood which is present in the lung. ब्लड आ रहा है 80%. अगर ब्लड बंद कर दें आप लंग में आना, तो स्कीमिक कर दें लंग को. तो हमारे वहाँ कई कार्डियक एनेस्थीसिया जो होते वो हाथ से किया करते थे वेंटिलेटेड को. जो टेटोलॉजी को करते थे ना, नहीं
आगे नहीं चल रहा। Measurement of gas exchange. For this purpose, you look at the PO2 means P small aO2, partial pressure of oxygen in the arterial blood, and PCO2 is the partial pressure of oxygen in the venous blood, arterial blood, carbon dioxide in the blood. Then AA gradient. A gradient is the difference of partial pressure of oxygen in the alveoli and the partial pressure in the arterial blood. Okay, A gradient normally 8 to 10 hota hai, you know. So it's affected by so many things. It's the volume above the residual volume at which the alveoli start closing. It's a very important test for obstructive lung disease. Closing volume. Then closing capacity, another terminology. It's the residual volume plus closing volume is called closing capacity. These two tests are very sensitive tests in pulmonology. पता नहीं करते कि नहीं करते. सुना आप लोग नाम closing volume? मेरे पास तो मेडिकल ऑफिसर जितने हैं उनको पूछा क्लोजिंग वॉल्यूम करिए क्या होती है. और मार को मैंने पूछा कि क्लोजिंग वॉल्यूम क्या डेफिनेशन कहते हैं ये तो आज तक देखी नहीं मैंने किताब लफ्ज़ ही नहीं सुना. Then diffusion capacity. Diffusion capacity actually होना चाहिए. Diffusion capacity is how many milliliters of oxygen are passing through the alveoli, passing from the alveoli to the blood per millimeter of mercury pressure difference per minute. कि कितने मिलीलीटर ऑक्सीजन 1 मिनट में 1 मिलीमीटर प्रेशर ग्रेडियंट हो तो जाती है आगे. You should know the DO2 of carbon monoxide. You should know the DO2 of this oxygen. This oxygen is 31 ml per millimeter pressure gradient per minute diffuse करती है. And how much the alveolar capillary pathway is 0.2 millimeter. और उसको हिसाब लगा लें कितनी ऑक्सीजन कैसे जाती है. ये डिफ्यूजन कैपेसिटी जो है ना ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बड़ा सेंसिटिव टेस्ट है. इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड मेनली इस्तेमाल करते हैं बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड हैज गॉट एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन 200 टाइम्स मोर देन द ऑक्सीजन. ठीक है, तो इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. देन नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन वॉश आउट टेस्ट, ऑक्सीजन इनहेलेशन मेथड, closing volume test, and xenon 133 inhalation test. Then tests for non-uniform blood flow. That is angiogram, lung scanning after injection of xenon 133. ये नाम ही याद रखें, इसकी डिटेल तो हमारे ज़माने में पूछी जाती थी, हम पढ़ते थे. हमारा ज़माना 75 years ago. Evaluation of, again, tests for uneven matching, evaluation of total dead space and total shunt. उनको असेस करेंगे तब आपको पता चलेगा. सिंगल ब्रेथ कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट, डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन द एलुलर गैस एंड द आर्टीरियल ब्लड, उनका डिफरेंस देखते हैं. देन यूनिफॉर्म लंग फंक्शन टेस्ट, यूनिलैटरल लंग फंक्शन, एक लंग के निकालने हो. ब्रोंकोस्पायरोमेट्री, ब्रोंकोस्कोपिक गैस सैंपल, टेम्पररी यूनिलैटरल pulmonary artery occlusion test, then intraoperative measurement of pulmonary arterial pressure. Non-invasive fluoroscopy, lateral position test, exercise test, xenon 133, radiospirometry, then macroaggregate cell lump scanning. These are all tests. You are not supposed to know the details, but we were supposed to know the details when we were studying. लेकिन इनके नाम जरूर आपको आने चाहिए जो एग्जाम में अपीयर हो रहे. मेरे जैसा कोई बूढ़ा आदमी बैठा हो पूछ लेगा. ठीक है. Now, locating regions of uneven matching, xenon 133 is the only test. Now, important question. As an anesthetist, as an intensivist, ये भी हैं और भी हैं. VD over VT ratio, you can measure it. PaCO2 minus PeCO2 over PaCO2. आप निकाल भी सकते हैं कि जब हम ट्रेनिंग पे थे, हमें ये निकाल आता था. मैं आप हाथ से निकालें इसको. मैं अपने निश्चित वाले ICU में निकलवाया करता था लड़कों से. आप कैलकुलेट करें, आप कंप्यूटर तो आप बताता है, लेकिन आप खुद करें. Partial pressure of oxygen in the alveoli, PiO2. How much is the PiO2? FiO2 से PiO2 निकालें. अगर आप 21% ऑक्सीजन रह रहे हैं एयर में, इसका कितना प्रेशर है इसको निकाल सकते हैं ना. हाँ जी, सिर थोड़े हिल रहे हैं.
तो कितना प्रेशर आपके ऊपर 760 मिलीमीटर मर्करी, इसमें वाटर वेपर कितना है 47, बाकी इतना गया 713 को जरूरत नहीं 21 डिवाइड करें 100 पे, it will become 148 or 149 millimeter mercury. This oxygen is going into our respiratory pathway under this pressure. It is called PiO2, partial pressure of inspired oxygen. 148 गया लंग में एल्वोलाई में, वहां आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, उसका है 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी, वो उसमें से निकाल दे, बाकी बच गया P big AO2, partial pressure oxygen एल्वोलाई, वो PiO2 माइनस PaCO2 निकाल दे तो PaO2 तो बड़ा इजी निकल आता है, मुश्किल नहीं आएगा। उसके बाद शंट निकालते हैं कि कितना ब्लड, हाउ मच द ब्लड नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द गैसेस, सारा तो नहीं होता ना, गुजरता है उसमें, आप कितना गुजरता है 1 मिनट में ब्लड लंग में से, इक्वल टू टोटल ब्लड वॉल्यूम इक्वल टू कार्डियक आउटपुट, 1 मिनट में गुजर जाता है उसमें से। और ये अगर आपको पता हो क्वांटिटी ऑफ CaO2 माइनस CCO2 कैपिटल का और CvO2 माइनस CCO2, इससे आप शंट इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक, ये भी मुश्किल काम नहीं है अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें। ठीक, Can I shift over to other one? Mechanical. Yeah. ये आप स्लाइडों से बढ़ाया करते थे, मेरे साथ एक मरहूम था असिस्टेंट, थिएटर असिस्टेंट था वो, मेरे साथ हमें चाय वगैरह बना के, आप लोगों को भी हो गया कोई डेजिग्नेटेड थिएटर असिस्टेंट, चाय वगैरह बना के देते हैं। तो जब मैं सुबह 7:25 में पहुंचता था तो वो प्रोजेक्टर निकाल के रख देता था सब क्लास में। एक दिन उसने नहीं रखा, तो ये सलमान वगैरह सारे बैठे थे, इन्होंने कहा आज क्या सर ने कोई लेक्चर नहीं लेना, कहते नहीं आज उन्हें दिमाग से पढ़ाना है। वो समझ लें क्यों जी, आपको तो पता होगा। अब वो समझते थे कि जब इसमें पढ़ाते तो दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, तो आज मैं सोच रहा था कि दिमाग इस्तेमाल करूं थोड़ा सा। तो how does it work? Breathing it, no, just to give you an example, in inspiration to take the gases in, then during expiration you take the gases out. Now, as I told you already, there are two things, respiration and ventilation. Respiration, spontaneous respiration भी हो सकती है, artificial respiration हो सकती है। Respiration is a negative pressure breathing, and ventilation is always positive pressure breathing. ठीक है, positive pressure breathing could be artificial, and the example is जो हम आम इस्तेमाल करते हैं, उसमें दो किस्म की, low frequency positive pressure ventilation and high frequency positive pressure ventilation. आगे हाई फ्रिक्वेंसी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन भी 3 किस्म की है, ठीक है, ऑसिलेशन है और दूसरी है स्लो है, लेकिन आप इसको हाई फ्रिक्वेंसी उस वक्त कर देते हैं व्हेन यू मिनिममली यू इंक्रीज द रेट अप टू 4 times द नॉर्मल। अगर आप 15 दफा ले रहे हैं, 4 से ज़रब दे 60 से ऊपर लेना शुरू कर दें, दैट विल बी हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेशन। इसको डिफरेंट तरीके से, लेकिन बहुत ज़्यादा जब हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशन वगैरह देते हैं उससे तो ऐसे कर रहा होता है लंग, उसमें तो 250 to 350 तक उसका रेट होता है, रेस्पिरेटरी रेट, वो डिफरेंट वे से कैसे अंदर जाती हैं, उसके आगे डिटेल है। हाँ जी, हाँ उसको हम हाई फ्रिक्वेंसी कर देते हैं। जैसे आप 15 दफा सांस लें, अगर आपके सामने आपको बॉस ना खड़ा हो तो 15 दफा दें तो 60 दफा हो गए, 60 से ऊपर हो गया आपका हाई फ्रिक्वेंसी। नाउ द वेंटिलेटर्स आर बेसिकली 3 टाइप्स, प्रेशर जनरेटर्स, फ्लो जनरेटर्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब हमारे पास जो आते हैं वेंटिलेटर, मोस्टली इट इज अ कॉम्बिनेशन, इसमें फ्लो जनरेशन का भी मैकेनिज्म का भी होता है प्रोविजन, एंड प्रेशर की भी होती है।
मोड्स दो हैं, बेसिक मोड्स दो हैं, एक है वॉल्यूम कंट्रोल, दूसरा है प्रेशर कंट्रोल। देखा होगा ना आप लोगों ने वेंटिलेटर में, व्हेन यू फिक्स द कैलकुलेटेड वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल आपने देखना है कि ये आदमी इतना है, इसका वेट इतना है, हम इतने मेल पर किलोग्राम देना चाहते हैं, निकाल लिया आपने वो, उसने उस पर सेट कर दिया। Then next thing you look at it, to deliver this volume, how much pressure is generated? You look at the peak inspirating pressure. That's important. Okay? When you control, give the volume control, then you look at the PIP. Right? When you put on the pressure control, then you look at the tidal volume. आपने पहले ही दिमाग में tidal volume निकाली हुई है कि this is acceptable tidal volume, which will be corrected after the taking the result of this ventilation, which is PCO2 and PO2. वो आपका रिजल्ट बताएगा ना, वहां तक करने के लिए पहले ही आपने कैलकुलेटेड आपने टाइटल वॉल्यूम अचीव करनी है। या तो टाइटल वॉल्यूम को फिक्स कर दें, वॉल्यूम कंट्रोल पे डालें, या प्रेशर को बढ़ाते जाएं, कर दें। लेकिन हमेशा असूल ये है, मेरा तो अपना असूल ये है कि यू ऑलवेज पुट द पेशेंट वॉल्यूम कंट्रोल फॉर फ्यू मिनट्स, then you see how much pressure is needed to generate this volume, how much pressure is generated to get this volume. उससे रफली आपको पता है। अब मैं प्रेशर कंट्रोल पे डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, फिर देखिए how much pressure control, you keep an eye on the volume. ये ना हो कि 20 का किया है, उससे आपको एक पेशेंट में आपका 200 टाइटल वॉल्यूम है, आपने 500 बनानी है, फिर उसको प्रेशर को बढ़ाएंगे। अगर किसी का 20 पे ही 700 आ रही है, आप उसको प्रेशर को कम करेंगे। तो इसलिए पहले ही आपको असेस करने के लिए वॉल्यूम कंट्रोल, ठीक है, बड़ा सिंपल है, ठीक है ना, ये बेसिक है इसके असूल। Now, mechanical ventilation, mode classification, trigger mechanism, what causes the breath to begin? Then, what regulates the gas flows during the breath? एक होती है वॉल्यूम जाती है, दूसरा होता है फ्लो। फ्लो और वॉल्यूम को अलग रखें। फ्लो आप जब when you breathe in, you are breathing in tidal volume of 500 ml spontaneously. At what speed the gas goes in? कितनी होती है पता है? वो बता के नहीं जाती अंदर। इससे पीक इंस्पिरेटिव फ्लो रेट देखते हैं आप, उससे देखे आले से पीक इंस्पिरेटिव फ्लो रेट कितना है, दैट इज 20 to 40 लीटर्स। तो 20 to 40 लीटर स्पीड से गैस जाएगी तो एक ब्रेथ में आपकी टाइडल वॉल्यूम 500 अचीव होगी। जब आप गैस बाहर निकालते हैं then you look at the peak expiratory flow rate, ये फास्ट होती है, पीक इंस्पिरेटिव फ्लो रेट फास्ट होता है। How much is the peak expiratory flow rate? 450 to 500 liters। वो ज्यादा स्पीड से बाहर आती है, ठीक है। सो पीक इंस्पिरेटिव फ्लो रेट एंड पीक एक्सपिरेटिव फ्लो रेट को भी आपने दिमाग में रखें, इसलिए वही यहाँ चीजें अप्लाई होती हैं। तो लिमिट रेगुलेट्स गैस फ्लो ड्यूरिंग द ब्रेथ एंड साइकिल मैकेनिज्म, इंस्पिरेटिव टू एक्सपिरेटिव, एक्सपिरेटिव टू इंस्पिरेटिव। किस किस्म का साइकिल है? क्या फ्लो साइकिल है, प्रेशर साइकिल है, टाइम साइकिल है, वॉल्यूम साइकिल। 4 किस्म के साइकिल होते हैं, आम साइकिल की तरह नहीं, वैसे 4 किस्म की साइकिलिंग होती है इनकी, ठीक है। तो ये मॉड्यूलेटिंग मोड्स हैं आपके, ये बड़े आजकल एयर में चल रहे थे कि जी डिफरेंट मोड्स आगे फलान, ये मोड्स नहीं, ये मॉड्यूलेटिंग मोड्स हैं। PRVC, IMV, MVB, फिर उसके बाद SMV बन गया, SMV प्रेशर, SMV वॉल्यूम, देन CPAP प्रेशर सपोर्ट वाले, BiPAP, APRV, ASV, WAP, ASV, PAV, NEVA। ये है ये आप हर कंपनी के लिहाज से जिस किस्म का वेंटिलेटर है उसमें उन्होंने प्रोविजन दी होती है, उसकी डिटेल दी होती है कि कैसे इनको मोड को आपने चेंज करना है, ठीक है। इंडिविजुअल को वैसे रटने की जरूरत नहीं, उसी वेंटिलेटर आपको खुद बताता है आपका। ये है मॉड्यूलेटिंग मोड, लेकिन बेसिक मोड दो ही है, वॉल्यूम कंट्रोल एंड प्रेशर कंट्रोल। ओरिजिन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन, नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर, इसको आयरन लंग भी कहा करते थे। आप लोगों तो नहीं देखा होगा कहीं, देखें? जब मैं करने लाहौर गया था, वहां था किंग मेडिकल में पढ़ा था, उसमें पेशेंट को अंदर डाल देते हैं, ऊपर से ऐसे करके चेस्ट घेर देंगे,
और उसमें नेगेटिव प्रेशर करते चेस्ट को बाहर खींचता हो, माउथ खुला होना चाहिए या ट्यूब डली होनी चाहिए, तो इट विल क्रिएट सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अराउंड द चेस्ट, इट विल पुल द चेस्ट आउट, दैट विल क्रिएट सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द लंग एंड द गैस विल फ्लो बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, उसको आरएलएन कहते हैं, वो नेचुरल वे ऑफ ब्रीदिंग फ्लो, नेचुरल वे। उसके बाद पॉजिटिव प्रेशर की यूनिट शुरू होगी 1955 में, ये मैसेच्यूसेट्स हॉस्पिटल ने पहली दफा शुरू किया। Now, whenever you talk about the ventilator, you should know the ventilator setting and what are the indications to intubate, what are the indications to ventilate, what are the indications to extubate, and what are the management protocol and guidelines of your own hospital. दुनिया की एक स्टैंडर्ड है, उस लिहाज से अपनी हॉस्पिटल की गाइडलाइंस बनाएं, प्रोटोकॉल एंड गाइडलाइंस ऑफ नॉट ओनली वेंटिलेटर, ऑफ एनीथिंग व्हिच यू डू। हम बना रहे हैं, हमारा छप नहीं है, हमारे मेडिकल की बनाई है, दुनिया की चीज़ें इकट्ठी करके ना उनको इकट्ठा कर दिया अपने लिहाज से और अपने माहौल के लिहाज से, तो उसी को फॉलो करें। एवरीबॉडी शुड फॉलो दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर हर एक ने अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए तो मरीज को नुकसान पहुंचेगा, उसमें आप उस प्रोटोकॉल को पूरा फॉलो करें। दो चीज़ें होती है वेंटिलेशन से आप लेते हैं। You look at the ventilation. When you use the ventilation, you always think about carbon dioxide. When you use the word ventilation, you always think about the carbon dioxide. And the next component is the oxygenation. हमारा टारगेट यही होता है, it doesn't matter बाकी 40 सेल बेशक डैमेज हो जाए, 40 किस्म के सेल जो है ना, 38 किस्म के सेल के दो तो निकल गए निमोसाइट और सरफेक्टेंट वाले, बाकी 38 टाइप सेल बेशक डैमेज हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन हमारा टारगेट होता है गैसेस को नॉर्मलाइज करना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को कहेंगे उसको वेंटिलेशन के लिहाज से हम लफ्ज से बोलेंगे, अगर ऑक्सीजन को कहेंगे तो ऑक्सीजनेशन के लिहाज से चलेगा। ठीक है, तो इस द गोल ऑफ वेंटिलेशन इज टू फैसिलिटेट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज एंड मेंटेन नॉर्मल PaCO2। एक वेंटिलेशन का ये गोल है। ठीक है, तो इसमें हम लुक एट द मिनट वॉल्यूम, टोटल अमाउंट ऑफ गैस पर मिनट कितनी अंदर जा रही है और उतनी बाहर निकली, कहीं और रास्ता तो नहीं निकलने का गैस। इंस्पायर्ड टाइटल वॉल्यूम सेट कर देते हैं, अंदर जाती है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि अंदर कितनी गई है? आपके पास वेंटिलेटर है, बाकी सर्किट है, उसके बाद कैथेटर माउंट है, उसके बाद ट्यूब है, कहीं भी लीकेज हो रही होगी। आपने तो वेंटिलेटर पे सेट कर दी, वो आप चले गए अंदर, लेकिन यू ऑलवेज मॉनिटर द एक्सपायर्ड टाइटल वॉल्यूम। एक्सपायर्ड टाइटल में पता लगता है कि जितनी अंदर गई वही निकल रही है बाहर। अंदर ना कोई फैक्ट्री लगी है कि ज्यादा निकालेगी, ना कहीं वहाँ अंदर जाके लंग में कोई लीकेज है कि किसी और ऑर्गन में चली जाए, लिवर में या और कहीं चली जाए, तो वही आएगी वापस। ठीक है, तो इसलिए एक्सपायर्ड को मॉनिटर करते हैं हम। टोटल मीटर वॉल्यूम, दैट इज रेस्पिरेटरी रेट इनटू टाइटल वॉल्यूम। देन टोटल मिनट वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, एल्वेओलर वेंटिलेशन एंड डेड स्पेस वेंटिलेशन। जो आपकी टोटल टाइटल वॉल्यूम है उसका 1/3 जो है डेड स्पेस में। डेड स्पेस आपकी कहाँ तक है? लंग की। आपकी कहाँ तक है डेड स्पेस? नाक या मुंह से लेके अप टू रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, अप टू रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल आपकी, तो वहाँ तक ब्रोंकियल आर्टरीज आपको ब्लड सप्लाई करती हैं और वापस ब्लड एजाइगोस वेन में आता है। ठीक है, उसके नीचे पल्मोनरी वेसल्स सप्लाई करती हैं, पल्मोनरी आर्टरी में आया, पल्मोनरी वेन में वापस चला गया। ठीक है, बिकॉज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बियॉन्ड दिस रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल। ठीक, तो आपकी डेड स्पेस लगता है एनाटॉमिकल डेड स्पेस, देन फिजियोलॉजिकल बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर फैक्टर्स। तो इसमें वो जो है ना कि टोटल डाल वाली आपने 500 दी है, उसका 1/3 डेड स्पेस में रह जाता है, बाकी कितना रह गया? 500 में से 1/3 निकाल दे, बाकी रहेगी एक्चुअली वो गैस विच कम्स इन कांटेक्ट विद द गैस। उसी को फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं रेस्पिरेटरी रेट से, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी मिनट, एल्वेओलर मिनट वॉल्यूम। वही काम की है, तो ये तो दरमियान में उतनी रहनी है डेड स्पेस। आप इस डेड स्पेस को और बढ़ा देते हैं, क्यों? आगे आपने ट्यूब डाल के आगे कैथेटर माउंट डाल दिया, अब आपकी डेड स्पेस कहाँ तक है?
वो तो होगी एनाटॉमिकल डेड स्पेस। उसके बाद ट्यूब जो बाहर निकली है वो है, उसके बाद कैथेटर माउंट है, उसके बाद जब सर्किट से कनेक्ट करते हैं यहाँ तक इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी पोर्ट अलग-अलग नहीं हो जाती, वहां तक डेड स्पेस है। बाज़ दफा इसको कम करना पड़ता है, बाज़ दफा इसको बढ़ाना भी पड़ता है। तो पेशेंट था ना हाइपोकैपनिया वाला, बार बार करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती, फिर उसके बाद 2 कैस्टर माउंट लगाए इसके खिलाफ, फिर बिल्डअप होनी शुरू हुई। तो इसलिए उसको ये भी देखना बड़ा जरूरी है। और बच्चों में अगर बड़ा ही कैथेटर माउंट लगा दें, उसकी तो अपनी बहुत बड़ी टाइटल वॉल्यूम हो जाएगी, उसके तो एक्चुअल वॉल्यूम से बहुत ज्यादा हो जाएगी टाइटल वॉल्यूम। तो ये चीजें इट्स वर्थ कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये दैट्स वेरी इक्वेशन जो है इट इज 1/3 0.33 बनती है। नाउ minute volume is regulated by brainstem responding to pH and PaCO2. ठीक है, in a normal person when we say minute volume is regulated by center, respiratory center, अगर respiratory center ही उड़ गया ना उसके हम कहते हैं, उसके लिए करते हैं ब्रेन डेथ के टेस्ट। अगर हार्ट चल रहा है उस पर तो नहीं कर रहे ना, अगर सांस ले रहा हार्ट चल रहा है फिर तो ब्रेन डेथ के नहीं कर रहे, सिर्फ अगर रेस्पिरेशन रुक जाती है, एपनिया में चला जाता है। और दूसरा PaCO2 that regulates the respiratory center also, which is a chemoreceptor है। तो ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं इसमें। ऑक्सीजन जब तक PO2 इन एडल्ट 60 तक नहीं ले आते उस तक ऑक्सीजन डज नॉट अफेक्ट द रेस्पिरेशन, ठीक है। ऑक्सीजन का बहुत ही कम रोल है, ठीक है। नाउ वेंटिलेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ ICU इंक्रीज CO2 प्रोडक्शन। ये आप देखेंगे अक्सर पेशेंट जिसको फीवर है, सेप्सिस है, कोई इंजरी है या ओवर फीडिंग कर रहे हैं। ओवर फीडिंग किसकी? फैट की, अमीनो एसिड की, कार्बोहाइड्रेट। व्हेनेवर यू गिव कार्बोहाइड्रेट और parenteral फीडिंग, उसमें देखें कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट कितना है। यू हैव टू इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट टू वॉश आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये ना देखें उसका PCO देखें बढ़ रही है, क्या वजह है, क्या काज है। काज तो आप खुद है, बिकॉज यू आर फीडिंग द पेशेंट विद कार्बोहाइड्रेट। तो उनको थोड़ा सा हाइपर वेंटिलेट करते हैं ताकि वो निकले बाहर, ठीक है। तो इंक्रीज VD जो है डेड स्पेस, वो भी एटिलेक्टिस हो जाए, लंग इंजरी हो जाए, ARD हो जाए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए। पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गई तो वैसे को ब्लॉक कर दी, तो वो भी एक जो है एल्वोलाई जो है कंसर्न एल्वोलाई जो है उसमें गैस जाएगी, निकल आएगी, वहाँ पे प्रोफिजन ही नहीं, वेंटिलेशन है प्रोफिजन को नहीं। तो इसलिए वेंटिलेशन प्रोफिजन के मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉर्मली देयर आर 300 मिलियन एल्वोलाई एंड सरफेस एरिया 1 एल्वोलाई कितना होता है? अगर सारे एल्वोलाई को खोल के रख दें 70 स्क्वायर मीटर बनेगा सरफेस एरिया टोटल। और अगर सारी वेसल को खोल के रख दें लंग की 70 स्क्वायर मीटर, उसका भी बेड होगा, एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। अगर वेंटिलेशन को परफ्यूजन के साथ मैच करें दैट इज कॉल्ड वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। नॉर्मली कितनी होती है? नॉर्मल एल्वोलर वेंटिलेशन आप उसमें डेड स्पेस निकाल दें अबाउट 4 लीटर है, आउट ऑफ 5 लीटर 4 लीटर। ब्लड कितना आ रहा है? 5 लीटर 1 मिनट में। 4 लीटर डिवाइडेड बाय 5 लीटर कितना हो गया? 0.8। 0.8 should be the ventilation perfusion ratio. It should be of a total lung, it should be of individual lung, it should be of individual lobe, it should be of individual alveoli. बच्चा पैदा होता है इसकी ventilation perfusion, if the child is normal, the ventilation perfusion of every corner of the lung should be 0.8. यही आपने 0.8 को बढ़ाया, इसमें there is a dead space effect, बढ़ गई है डेड स्पेस। अगर कहीं यही आपने इसको कम किया, इट इज शंटिंग इफेक्ट, ठीक है। ब्लड ज्यादा आ रहा है तो वेंटिलेशन के ब्लड, सम ऑफ द ब्लड इज नॉट कमिंग कांटेक्ट विद द गैसेस पासिंग जस्ट लाइक दैट, ठीक। ये सिंपल चीजें है ना, आप लोगों को सभी को आती हैं, आप लोगों ने सेकंड ईयर से पढ़ा हुआ है। आप इसको एक दफा फिर रिवाइज कर लें थोड़ा सा, इसी पे चीज आगे ब्लड गैसेस की इंटरप्रिटेशन जो है ना, अगर जिंदगी रही तो मैं कराऊंगा ABCs भी उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। हम तो सिर्फ PA2 और PCO2 को देख के PH को देख के नॉर्मल है जी नॉर्मल करके, या ये है इस बेस क्या एसिडोसिस एल्कलोसिस रेस्पिरेटरी मेडोल के रुक जाते हैं, लेकिन असली चीज़ें आगे हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। वो सारी डिराइव्ड पैरामीटर्स जो है ना वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर मैनेजमेंट डिपेंड करती है। और नाउ वेंटिलेशन, चलो ये तो हो गया। Now, oxygenation is the second part.
The primary goal of oxygenation is to maximum oxygen delivery to the blood. Oxygenation यहाँ से start होती है आपकी. अगर कहें मैं किसी को कहूँ, have you assessed the oxygenation status of patient? उसमें क्या क्या included है? FiO2 कितने % ऑक्सीजन लेते हैं, उसका PiO2 निकाले, under what pressure ऑक्सीजन going. फिर आप alveoli पे आ जाते हैं. What is the partial pressure oxygen in the alveoli? P big AO2. फिर blood पे करते हैं. What is the partial pressure of oxygen in the blood? P small AO2. फिर उसको देखते हैं saturation. अब saturation और PO2 के दरमियान कोरिलेशन को कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे, टेम्परेचर पे, पीएच पे, और तीसरा 2,3-DPG डाइफॉस्फोग्लिसरेट. सभी की एक्सेस हो जाए, इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट. ठीक, इसलिए सैचुरेशन कम होगी, पार्शियल प्रेशर बड़ा वो होगा. उनमें जो सोचा करें क्या वजह है, तो अगर इनकी कमी हो जाए, इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट. ऑक्सीजन चिपटी हुई है, उसको छोड़ती नहीं. टिश्यू पे जाकर देखेंगे, लैक्टेट को देख रहे हैं, लैक्टेट बढ़ना शुरू हो जाता है. फिर इन फैक्टर्स को देखते हैं वो और से. ठीक है, उसके बाद आप फिर देखते हैं कि हीमोग्लोबिन कितनी थी. अब डिलीवरी ऑक्सीजन की कितनी है, DO2 निकालते हैं. डिलीवरी के बाद फिर आप देखते हैं वीनस सैंपल लेके उसकी DO2 देखें, उनका डिफरेंस जो होगा वो ऑक्सीजन हैज बीन टेकन बाय द टिश्यू, दैट्स कॉल्ड VO2, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन व्हिच हैज बीन एक्सट्रैक्टेड. इट शुड बी अबाउट 24 to 25% ऑफ DO2. अभी भी हमने पता नहीं उसने ऑक्सीजन तो ले ली है सेल ने, क्या इस्तेमाल भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिकॉज एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, एरोबिक और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म गोइंग ऑन. अगर ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं करेगा तो एनारोबिक होगी, अगर एनारोबिक होगी तो एसिड प्रोड्यूस होगा. फिर लैक्टेट पे जहां तक आपने कर लिया PiO2, FiO2, PaO2, सैचुरेशन, DO2, और फिर देख लिया लैक्टेट. नाउ आई विल से you have assessed the oxygenation status of a patient. फिर कार्बन डाइऑक्साइड का देखें, फिर एक्सपायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उनका डिफरेंस देखें. इधर ए ग्रेडियंट निकालते हैं, P big AO2 minus P small AO2, उधर देखते हैं PCO2 minus PeCO2, उनके डिफरेंस को देखते हैं. अगर उनमें फर्क आ रहा हो फिर उसकी काज ढूंढते हैं. काज इज लाइंग एट द एल्वेओलाइक पाथवे और इन द ब्लड और इन द एक्सपिरेशन, whether there is any obstruction to the expiration or not. इस तरह करते हैं एनालाइज. तो इसलिए उसमें 5-7 मिनट बैठ के लगाए अब उन सारे को एनालाइज करने के लिए. इसी तरह ये जैसे आप जब यू प्लान योर फ्लूइड थेरेपी, देन आल्सो स्पेंड 5 to 10 मिनट्स टू प्लान योर फ्लूइड थेरेपी. ठीक, फ्लूइड थेरेपी के कॉन्टेक्स्ट में अब ये क्लास कर दूं, यू फिल द बॉडी फ्रॉम इनसाइड आउट. इनसाइड इज द वेसल, outside the vessel interstitial compartment, outside the interstitial compartment is a cell. There's no point filling the cell first and leaving the vessel empty, because vessel has to take the blood and oxygen and nutrition to the cell. पहले उसको नॉर्मलाइज करें, जब वो नॉर्मलाइज है फिर इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट को नॉर्मलाइज करें, फिर उसके बाद सेल को नॉर्मलाइज करें. तो जो इसका सिंपल वर्ड है, यू फिल द बॉडी फ्रॉम इनसाइड आउट. ठीक, पेन को रिलीव करने में यू ट्रीट द पेशेंट फ्रॉम आउटसाइड इन. पहले लोकल ब्लॉक इन्फिल्ट्रेशन करें, नर्व ब्लॉक लगाएं, फिर ऊपर ट्रैक्ट की तरफ से आए, फिर उसके बाद नार्कोटिक जो सेंटर पे काम करते हैं उनको इस्तेमाल करें. यू ट्रीट द पेशेंट फ्रॉम आउटसाइड इन, ट्रीट द वेसल फ्रॉम इनसाइड आउट. इनसाइड आउट इज अ कंसेप्ट. कहते हैं अगर अंडा अंदर से टूटता है तो एक लाइफ बनती है, अंडा बाहर से तोड़ते हैं तो एक लाइफ खत्म होती है. तो इसलिए हमें पहले अपने आप को करेक्ट करना चाहिए, फिर दूसरों को नसीहत करना चाहिए. यही होता रहा कि 40 साल रसूल पाक ने नबूवत का इज़हार इसलिए नहीं किया कि अपने एग्जाम्पल बना के दिखाई उनको. पहले अपने आप को ठीक किया, फिर दूसरों को कहा कब देखो मेरी तरफ. ठीक है, थिंग्स ऑलवेज, गुड थिंग्स ऑलवेज हैपन फ्रॉम इनसाइड आउट. राइट, टाइम है ज्यादा तो नहीं हो गई. चलिए वहाँ फिर मैं नेक्स्ट शुरू करेंगे. ठीक है ना, प्रेशर साइकिल वेंटिलेशन, और फिर उसके बाद इंडिकेशन मैं करूँगा. ठीक, थैंक यू वेरी मच. कोई सवाल हो तो ऐसे बातें करता रहा हूँ. इसकी अगर किसी ने कॉपी करनी है तो कर लें. जी थैंक यू सो मच. ऑनलाइन जो पार्टिसिपेंट है वो क्वेश्चन कर सकते हैं सबसे पहले.
बेसिक क्लियर है तो सेकंड ईयर ऑफ मिडिल सपोर्ट, बेसिक क्लियर है तो सेकंड ईयर ऑफ मिडिल सपोर्ट। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और वैसे भी आप मैसेज में सर को, सर के सामने सर बैठे हैं आप बैठो, नहीं आयशा आ जाओ, आपके सामने रख दो। अच्छा नहीं बच्चे सवाल है अभी कोई आता है मैं वहां से स्पीकर ऑन कर, जी कभी कोई क्वेश्चन आएगा कोई नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच एंड द नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन अल्टरनेटिव फ्राइडे एंड वी विल कैरी ऑन कंटिन्यू। यस, तो ये हम जो है ना नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ऐसे ही ऑनलाइन भी देंगे और यहाँ पे फिजिकली भी प्रेजेंट जो लोग हैं उनके लिए, और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी बाद में सर के जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी अपलोड कर देंगे, उसको भी वहां से आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस लेक्चर। सर, ये आपके चैनल पे भी अपलोड हो जाएगा सर, जो आपका चैनल है